ओके, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? class. Mas suçu patlayı. Yaparız aqui nessa série, só uma vez. Mas as jaldi. Acho que não vai haver mais de mas dá oi. Admissão aí you. So let me share the screen. Okay. तो कल हमने किया था बेसिकली वो एक एक्सरसाइज थी, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज एक्चुअली, दैट अगर ratios of the they are proportional, these first and second order fundamental magnitudes, then the surface can either be a plane or spherical. यानी हमने किया था कि E by L अगर बराबर है F by M which is equal to G by N, अगर ये true है then the surface is either a plane or spherical. ठीक है? So that's what we did. और इसको जो हमने हम यहाँ तक पहुंचे थे, हमने using this condition, using this assumption, हमने 4 इक्वेशंस हमें मिली थी। वो ये था कि एक तो ये थी कि न्यू टाइम्स आर सब यू प्लस एन सब यू डॉट आर सब यू इज इक्वल टू 0, एंड देन न्यू टाइम्स आर सब वी प्लस n sub v dotted with r sub v is equal to 0. Similarly, mu times जो 4 possibilities है r sub u plus n sub v, right? n sub u भी होगा, दोनों का ही होगा एक्चुअली, वो हम कर चुके हैं ऊपर। एक मिनट, तो r u आ गया तो यहाँ पे आना चाहिए n sub u ही होगा ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पे होगा r sub v is equal to 0, and similarly mu times r sub v plus n sub v dotted with क्या आएगा, m v, तीनों v है तो यहाँ हाँ यहाँ u लिखते हैं हम, चलो जस्ट u फिर v और सब v इज इक्वल टू 0। ये हमें 4 इक्वेशंस मिलेगी जैसा कि हमने कल किया था फ्रॉम दिस assumption. Now what we do, now since n is perpendicular, we know that n is perpendicular because it is a vector of magnitude 1 to both n sub u and n sub v. Therefore it implies that, जैसा कि हम कर भी चुके हैं वाइनगार्डन इक्वेशंस में, कि n sub u and n sub v lie in the plane generated by r sub u and r sub. Okay, तो it implies that जो अगर मैं लूं ये वेक्टर mu r sub u plus n times n sub u and mu r sub v plus n sub v, ये जो ये वेक्टर्स है, they also lie in the plane, in the tangent plane, in the plane that is spanned by ru and rv. क्योंकि ये उसमें है, ru भी उसी में है, तो उनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन उसी प्लेन में है। तो ये दोनों वेक्टर्स r sub u and r sub v में है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये मुझे बताती है ये जो ये दोनों वेक्टर्स हैं
या ये चारों इक्वेशंस को अगर मैं इकट्ठे देखूं, अगर मैं इसको लूं म्यू आर सब वी, इसका डॉट प्रोडक्ट आर यू के साथ भी जीरो है और आर वी के साथ भी जीरो है। इसी तरह से इस वेक्टर का आर यू के साथ भी डॉट प्रोडक्ट जीरो है, आर वी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट जीरो है। तो आई हैव अ सिचुएशन लाइक दिस, आई गॉट आर यू and RV, और इसी प्लेन में of course they are not, they could be perpendicular, that need not be, but they cannot be collinear also because we are talking of a regular surface. तो अब ये प्लेन मान लो है मेरा, इसमें दो वेक्टर्स हैं, ये मेरा प्लेन है। अब इसमें कोई और वेक्टर है, तो क्या ये पॉसिबल है कि ये वेक्टर इन दोनों को परपेंडिकुलर हो? ठीक है ना? सो देयरफॉर वही मैं लिखूंगा, देयरफॉर अगर मैं इन दो इक्वेशंस को लूं, एम आर यू प्लस एन सब यू dot r sub u is equal to 0 and mu times r sub v plus r sub u plus n sub u dot r v is equal to 0, अगर मैं दो को करूं, it would imply this would be true, क्योंकि it is not possible कि ये दोनों वेक्टर्स को प्लेन, ये इसी प्लेन में पॉसिबल है अगर इस प्लेन से बाहर होता, लेकिन अगर ये वेक्टर इसी प्लेन में रहता है जिसको ये स्पैन करते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि ये दोनों को परपेंडिकुलर। तो एक ही सिचुएशन बचती है कि ये वेक्टर जीरो, तभी ये इन दोनों, बिकॉज जीरो इज परपेंडिकुलर टू एवरी अदर वेक्टर, सो अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल, ये नॉन जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये नॉन जीरो है, ये कहीं पे इधर है, हाउ कैन इट बी, इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ unless they are parallel, which cannot be true because regular surface पे ये they are not collinear, they are not parallel, r u cross r p जो है वो नॉन जीरो वेक्टर है। ओके, सो वंस इट मतलब will मतलब these equations will hold if and if only if, बल्कि if and only, क्योंकि और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, if and only if mu times r sub u plus n sub u is equal to, which implies that n sub u is equal to minus mu times r sub u. So let's call this, पता नहीं इससे पहले मैंने किसी का नाम दिया है, anyway let's call this 2. Similarly, अगर मैंने चार इक्वेशंस की बात की, उसमें दो और है। Similarly, from the other two equations, जो कि है क्या है, mu r v plus n sub v dot r sub u is equal to 0 and mu times r sub v plus n sub v dot r sub v is equal to 0, हमें मिलेगा, we will get n sub v is equal to minus mu times r sub v by the same reason. Let's call this equation third. Now differentiating second partially with respect to u, पहली है तो v, and third partially with respect to u, we get, तो हमें क्या मिलेगा, n sub uv is equal to minus mu times r sub uv plus नहीं minus mu sub v r sub u. Oh, this is not a vector, r sub u, ठीक है, एंड और दूसरे से हमें मिलेगा एन वी यू इज इक्वल टू माइनस म्यू आर सब वी यू माइनस म्यू यू आर सब, क्या मिलेगा, आर सब वी। ओके, सो अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं यूजिंग द फैक्ट दैट मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स आर इक्वल, सो नाउ सिंस एन सब यू, ओके क्या है ये ठीक से लिख नहीं रहा है, एन यू वी
is equal to NVU because these are second order derivatives are continuous, so therefore mixed partial derivatives would be equal. And of course R sub UV is the same as R sub BU. अगर मैं दोनों को subtract करूं, ये दो terms cancel हो जाएंगी, एक plus हो जाएगा एक minus, so which would mean, तो we get after subtracting हमें मिलेगा mu u times R sub u is equal to mu v times R sub क्या आएगा, v है तो u है, so it means थोड़ा सा हो गया इसमें, ठीक है, इसी तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ओके, यानी मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, चलो, यानी हमें इससे मिला mu u times rv is equal to mu v times ru. So let's call this equation, इससे पहले कौन सी इक्वेशन की थी हमने, 3, ये है अपनी इक्वेशन 4। ओके, लेकिन इसमें अब दिक्कत है, व्हाई, ये तो होल्ड नहीं करेगी, बिकॉज इट मीन्स दैट आर वी एंड आर यू आर इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि इट इज स्केलर, मतलब दिस इक्वेशन कैन नॉट बी ट्रू अनलेस बोथ म्यू, ये दोनों जीरो हो जाए, यानी दोनों साइड जीरो हो, ये स्केलर्स अनलेस जीरो हो, तो यू कैन नॉट हैव आर यू फॉर अ रेगुलर सरफेस आर यू एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ आर वी। तो सो नाउ सिंस, ऐसे में लिखता हूं, now since r sub u and r sub v are not parallel for a regular surface, or we are dealing with a regular surface, are not parallel, it implies the 4 will hold, जो कि hold करनी चाहिए, if, only if mu sub u या तो mu sub u भी जीरो हो और mu sub v भी जीरो, दोनों, which means that mu is a constant, which implies that mu does not depend upon u and v, because d mu would be zero. It's a function of both u and v, because it's a ratio of say L and J, the E and F, G, E and L, F and M, G and N, ये ratio है, so of something that depends upon both u and v. So therefore mu is a constant, which means that now, अब दो cases है, now in case mu is equal to 0, तो हमें मिलेगा r sub u is equal to, अगर mu 0 है, ओके, अगर mu 0 होगा then I think we will get, अगर मैं पीछे जाऊं तो अगर mu 0 है तो इसका मतलब nv भी 0 है and u भी 0 है, अगर mu 0 है we get n sub u is equal to n sub v is equal to 0 from second and third, which implies that n is a constant, which implies that surface is a plane, जो कि हम इससे पहले कर चुके हैं। Now in case mu is not, it's a constant but not equal to 0. If mu is not equal to 0, then I can write r sub u is equal to minus r sub, क्या लिखा रहा है, r sub u is equal to minus 1 by mu n sub u, which gives us, अगर मैं, चूंकि ये constant है, I can integrate with respect to u, so it would give me that r sub r is equal to minus 1 by mu n plus some constant vector, right?
which would mean that norm of r minus a is equal to norm of minus 1 by mu times n, which is equal to mod of 1 by mu, which is some non-zero number, right? So which implies that r is equal to rv is civil. So that finishes this exercise. Now we next come to, how about angle between two curves? It's a simple. We know that पहले तो ये है कि अगर मेरे पास कोई surface है, इसमें of course parametric curves है, और उसकी डायरेक्शन, उसका जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है यू कर्व का, वो है आर यू। एक और सेट ऑफ पैरामेट्रिक कर्व्स हैं, और हर पॉइंट पे उसकी जो डायरेक्शन है या आर वी है। तो एक सिंपल सा है कि when we say angle between the curves, it is the angle between the tangents at that point. तो अगर मैं पैरामेट्रिक कर्व्स की बात करूं, अगर उनके दरमियान एंगल होगा, it would be the angle between RU and RV, because tangents to RV lie in the direction of RU and RV, and angle between curves wherever they intersect is the angle between the tangents at that point. So it's obvious that if omega is the angle, इसको हम यूज करेंगे कहीं पे, angle between parametric curves, you can always evaluate it. कैसे? So we know that RU dot RV divided by RU into RV is equal to cos of omega, by the definition of the inner product. So angle between, you can always evaluate this cos of omega in terms, but this is RU dot RV is just F, and this is root E, and this is root G, so it should be just root EG. So in this way we can find the angle. Similarly, we can find the sine of omega. So sine of omega would be, again, it would be the norm of RU cross RV divided by, of course, same RU into mod of RV, length of RV, that would be, of course, H by root G. And of course, you can also find the tan. So of course, if F is equal to 0, yani at each point I have got RU dot RV is equal to 0, so then we say that the parametric curves are said to be orthogonal. ठीक है ना? तो अगर ये condition हर जगह satisfy होती है, then we say if F is equal to 0 at all points on surface, because then the angle between them would be 0, because RU dot RV would be 0. Then what? The system of parametric curves are said to be orthogonal. अब हम आगे चल के ये दिखाएंगे कि जो हमारा एक्चुअली लास्ट रिजल्ट होगा इस यूनिट का, अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, कि गिवन एनी सेट ऑफ पैरामेट्रिक कर्व्स ऑन सरफेस, क्योंकि उसकी पैरामेट्रिक कर्व्स होंगी बिकॉज इट्स अ सरफेस, तो वी कैन, उसके दो पैरामीटर्स है, एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे को रन करेंगे, तो यू वन सेट ऑफ पैरामेट्रिक कर्व्स, एंड similarly with the other parameter you get another set of parametric curves which will intersect each other, because the RU and RV cannot lie on a regular surface, they cannot be parallel. So we will show that given any set of parametric curves, of course on a regular surface, we can reparameterize it so that जो नई parametric curves हैं वो orthogonal होगी। उससे पहले हम बात करेंगे, और टॉपिक है इस यूनिट में, that is what we call direction coefficients. It is basically directions on a surface. Now if you have a surface,
to evaluate them, to see the different conditions क्या होंगी उन कर्व्स की. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ किसी पॉइंट पे हूँ सरफेस के. Now if I, of course there is a parameter plane u and v, so I've got a point uv which is mapped to this point on the surface which lies in my xyz ambient space. Now, if I change them a little bit in some direction, so I would get some u plus say du, v plus dv, and accordingly I will get some point here, some point somewhere in the neighborhood. So of course, this slight change would determine a direction, at that point, small change in my parameters. Now the question is, can I somehow, can these first and second order fundamental magnitudes give me information about that direction? The answer is yes. So उसको formulate करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे. Now at any point, if we do at any point P, let it call it R at UV, on the surface कोई point है. Of course ये जो यहाँ पे point है वो R at UV है, मतलब because this is the mapping जो इस surface को बनाती है. Okay, on the surface R is equal to R at UV. There are independent vectors. There are three linearly independent vectors. कौन से linearly independent vectors? There are three linearly independent vectors. एक तो है अपना RU, दूसरा है R sub V और तीसरा है N, है ना. बिकॉज ये तो किसी मतलब पैरेलल नहीं है, फिर तीसरा वेक्टर ऐसे है, यानी हर पॉइंट पे यहाँ पे एक RU है, RV है, फिर N है, हर जगह हम ये इवेलुएट कर सकते हैं. And since we live in R3, it means that any vector can be written as a linear combination of these three vectors, because they would form, because they are linearly independent three vectors, they would form a basis, right? So of course, so that any arbitrary vector, which means any arbitrary direction actually, A at point P can therefore be expressed in the form, let's call it A is equal to some scalar times, let me call it A sub n, n plus lambda times R sub u plus mu times R sub v. यहाँ हमने numbers को थोड़ा सा फर्क किया, ये होगा उसका नॉर्मल कंपोनेंट उस वेक्टर का. बेसिकली उसका इस कंपोनेंट में हम इंटरेस्टेड है, which is tangential component which lies in the tangent plane at point P. तो हमें हमारा इंटरेस्ट उसमें होगा. ओके, नाउ where मैं ऐसे लिखूंगा lambda r sub u plus mu times, of course ये स्केलर्स हैं, यहाँ लिखते हैं an, हाँ वो तो ऑब्वियस है, right? is the tangential part of A, and of course an, lambda, mu are scalars, actually unique scalars determined by this equation. For this basis they are unique scalars. Okay, now if I take this tangential component, इसका नाम मैं t दूं. Now let this tangential component of any vector at point P, and it is basically its projection in the tangent plane,
at that point. So अगर मैं t को मान लूं, t is my vector lambda r sub u plus mu r sub v, right? We write as, now ऐसे मैं लिखता हूँ, now lambda mu are the components of this tangential vector of this vector t in the tangent plane, जिसकी basis है tangent plane, जिसकी basis है RU and V, we write it as इसको हम simply lambda mu लिखते हैं, ठीक है? उसकी वजह है, मतलब जैसे कि हम यहाँ पे, तो बेसिकली अगर कोई पॉइंट है 1 2, बेसिकली इट इज एक्चुअली 1 टाइम्स E1 प्लस 2 टाइम्स E2, यानी इट इज अंडरस्टूड, जब मैं इसको, मतलब अगर हमारी बेसिस हमें पता है तो वी जस्ट राइट द कंपोनेंट्स, अगर बेसिस इट्स ऑलरेडी नोन, क्योंकि यहाँ पर भी ये जो RU एंड RV, इट इज नोन कि it is the basis of the tangent plane, it generates the tangent plane, so we just, बजाय पूरा लिखने के, we just write it as lambda mu. Okay, and of course the scalar जो दूसरा है उसको हम नॉर्मल कंपोनेंट बोलते हैं, जो कि उतना जरूरी नहीं है, is called the normal component of A, और उसको इवैल्यूएट करना बहुत ही आसान है। वो कैसे? because if I take, and an is obviously equal to A dot n, क्योंकि n is perpendicular to both RU and RV, तो जब भी हम इसका क्या बोलते हैं, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे n का, तो इनके साथ उसका 0 हो जाएगा, तो n के साथ 1 हो जाएगा, एंड यू विल गेट, जो मैंने कहा कि इट इज E dot n. Now what we do, so I got any vector, so let me take a point P on a surface, और P पे कोई वेक्टर है, यहाँ पे किसी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर है P, तो मैं लूंगा यहाँ पे जो टेंजेंट प्लेन है उसमें उसका प्रोजेक्शन, विच इज माई T, राइट, जिसके कंपोनेंट है लैम्डा म्यू। सो बेसिकली ये जो लैम्डा म्यू है ये मुझे देगा डायरेक्शन, immediate direction at point P on the surface. So that's the idea. So what I write now is just to describe the direction in the tangent plane at P, it is convenient to use the components of the unit vector E say in the direction of T. अब हम T को नहीं लेते क्योंकि हम इंटरेस्टेड है खाली डायरेक्शन में, तो हम लेते हैं यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, खास कोई फर्क नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। सो डायरेक्शन ऑफ T और उसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे, एंड वी राइट इट एज, इसके डायरेक्शंस को मानते हैं LM। ये वही है जब तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया होगा, द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, तो लैम्डा म्यू वही है व्हिच गिव्स डायरेक्शन, एंड LM तो ये मान लो वहां के डायरेक्शन रेशियोज को का रोल प्ले करते हैं, और ये नंबर्स डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, और इसीलिए हम इनको कहते हैं एंड आर कॉल्ड डायरेक्शन कोफिशिएंट्स, ठीक है। सो 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 दस मैं ले सकता हूं कि norm of this E square is equal to 1, but that is equal to the length of L, इसके components are U plus M times RV, क्योंकि मैंने माना इसके components L and M है,
तो विच वुड बी नथिंग, अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूं, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूं, यानी चूंकि ये लेंथ स्क्वायर है, so it can be written as LRU plus MRV dot product with itself, LRU plus MRV, यानी जो E है, I can get this relation that it would be EL square, taking the fact that RU dot RU is L, RU dot RV is M, RV dot RV is G, so it would be EL square plus twice FLM plus GM square. So that is we get, अगर LM direction cosines है at any point, direction coefficients है at any point on the surface, then EL square plus twice FLM plus GM square is equal to 1. So that was about these direction coefficients. So we can now define them, although we have defined them actually. Okay, now कहने का मतलब, अगर मेरे पास surface है and I take a point P here, तो यहाँ पे एक direction है. To this direction along the tangent plane I can assign a pair of numbers. तो इसी तरह से to some other direction I can assign another pair of numbers and they would satisfy this equation always, right? तो if I define it properly now, जो मैंने ऊपर डिटेल लिखी उसको in short अगर मैं लिखूं, in short में नहीं लिख सकते, कोशिश करते हैं. तो अगर मैं डायरेक्शन कोफिशिएंट्स की अलग से डेफिनेशन लिखूं, तो इट वाज जस्ट ऊपर तो हमारा थोड़ा एक्सप्लेनेशन था. तो अगर हम इसको शॉर्ट में करना चाहें, वो ये हो गया कि लेट टी वेक्टर बी द टेंजेंशियल वेक्टर to the surface at some point, to the surface at some point, let me call it some point P, which has a vector or v associated with it in my R3 space, and suppose E is the unit vector in the direction of uh, T, and if L, M are the components of vector E in the tangent plane, by that I mean R E is equal to L R sub U plus M R sub V, then L M are called the direction coefficients of the direction represented by T. Okay, ये short में इस तरह से हम इसको कह सकते हैं. Now there is another जो एक important बात हम कर सकते हैं, वो ये है कि now I've got, अभी जो हमने किया था पैरामेट्रिक कर्व्स के दरमियान एंगल ढूंढना आसान है ना, but with the help of this we can actually find angle between any two arbitrary directions on the surface, because now I can associate a pair of numbers with. See here. So let me write it down like angle between two directions on a surface at a point. वही होगा कि हम उनका एक तरह से डॉट प्रोडक्ट लेंगे और फिर you know. Okay, now let
the direction coefficients of the two directions B, at point P, B, say Lm, and L prime, M prime, respectively, then corresponding to the unit vectors, then the corresponding unit vectors in the directions are given by, let's call it E is equal to L times Ru plus M times Rv, and E prime is equal to, say, L prime Ru plus M prime Rv. And if theta is the angle, between the two directions, cos of theta is simply because they are unit vectors E dot E prime. That would be, of course, if we substitute the values, तो वो होगा actually E L L prime plus F L M prime plus M L prime plus G M M prime. इस तरह से हम इसका angle evaluate कर सकते हैं. If we know these numbers, of course we will know them. They will be given for a certain change in U and V. तो अभी ये लेस देन 1 मिनट रहा है, तो मैं इसको वेट करता हूँ. ये बंद हो जाएगा, तुम फिर से ज्वाइन करोगे. तो आज आए हैं 24 स्टूडेंट्स, तो तुम मुझे अटेंडेंस